One, two. Check. Check test. Test. One, one, two. Check test. Check test. हम बात करेंगे। Come, sir. Taking visuals, that's all. आगे नहीं आएंगे अभी आगे अरे आगे है लिफ्ट में बस रुके बस अभी स्पॉटिंग अभी पीछे चलो जाओ हाय साई मैम रुको ना अरे बाजू में क्या कर रहा है उसका कान छाप रहा है होल्ड चल भाई शेष को बोलो शेष आने दो भाई आने दो आगे चल आगे इधर ही मचा आइए सर आइए एक सेल्फी इधर होल्ड दादा थोड़ा मागे आना होल्ड हाँ भाई वो लंबी हो गई मुझे नहीं पता इतनी लंबी कब होती है हमारे पास भी है स्टैंडी के पास वहाँ पे करा देना स्टैंडी के पास हाँ चलो ले लो हाँ ले लो स्टैंडी के पास चल इतना पास हो जाओ स्टैंडी के पास अरे तुम लाइट मारो भाई अरे क्या लाइट मारो चकरा रहा जाए जाके सब क्लियर मारा ठीक है ना क्या बॉडी वैसा बना है once again guys once again सही नाउ जवळ आहे ना क्लोज प्राची यहाँ पे देखना सामने बाकी आप हो गया अरे लो भाई साई समोर सर आपके राइट सर ऑन राइट डन थैंक यू थैंक यू Check. The man behind this amazing movie जिन्होंने इस कैरेक्टर को ऐसा स्क्रीन पे जीवंत कर दिया उनके लिए जोरदार तालियां वेलकम सर इट्स सो गुड टू सी यू एंड शुड आई से सल्यूट सर मेजर है ना मेजर को करते हैं साथ में एब्सोल्युटली वेलकम सो गुड टू सी यू एंड कंग्रेचुलेशंस ऑन दिस एक जिम्मेदारी की तरह आपने इसको निभाया आई वोंट कॉल इट कि आई वोंट से कि कितना प्रेशर था आपके ऊपर बिकॉज लिखा भी आपने इसको आई वोंट से कितना प्रेशर था बट एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी you've taken it up upon your shoulders what do you have to say on that I think काफ़ी responsibility तो है ही but over the course of this film uncle और अम्मा they've become like second parents to me मेरे संदीप्स parents मैं भी कह रहा था किसी से
और मैं ये फिर से कहूँगा कि ऑफ स्क्रीन मैं मेजर संदीप तो नहीं बन सकता, बट आई कैन बी अ सेकंड सन टू देम. So I think it's this feeling of immense joy. Usually, at least Telugu filmों में ये होता है कि by the time release dates are coming, we're struggling to finish the film and put the drives together and that sort of thing. और काफ़ी दफ़ा हिंदी फिल्मों में ये सुना है कि they don't show the film before the release. We've already shown it to 1,700 people across the country. And I'm proud to say that we're not tense at all, we're very happy. If that's not confidence, what would be यार? मतलब seriously, इतने लोगों को पहले जैसा आपने कहा सच में लोग बचा के रखते हैं कि रिलीज डेट पे ही हम ऐसा करेंगे, बट आपके साथ सर एक और कल्प्रिट हैं यहाँ पे, है ना? So I'd like to invite her on stage. Yes. और आप दोनों साथ में बड़े कमाल लग रहे हैं और ये भी एक रियल लाइफ कैरेक्टर है. So ladies and gentlemen, the very talented Sai Manjrekar. Ladies and gentlemen, जोरदार Yo, तालियां. yo! Welcome Hi, thank you. and congratulations on this. Thank you. All I thank want you to so say is, much. जैसा मैंने कहा, responsibility है. Here, it's not fictional, है ना? You're playing a character. You're playing a real life person on screen. How was it for you? I think since day one, I knew that it was a responsibility that Sesh and Sashi sir believed in me for, and I wanted to, make the most of it and make the best of it and prove myself to be worthy of that responsibility, and I hope I've done that. And I think it was. मतलब on screen ठीक थी, but off screen यार बहुत problem create किया समझ रहे यही चाहिए था मुझे. अभी मैं पूछूंगा इसके बारे में. यार थोड़ा tabloid वालों ने लिख दीजिए please कि मेजर के हीरो ये बोल रहे हैं. That is mean. ये off screen बहुत funny है, थोड़ी ज़्यादा ही funny है. सर गुस्सा दिख रहा था आंख में जब वो बोला. वो इसलिए हमने उनको थोड़ा मतलब ठंडा करने के लिए ओइशा करके गाना रिलीज कर रहे हैं हम आज. नहीं, लेकिन thank you for this. It was my dream to have a song with my name. So thank you. Yeah, and actually we're very proud and very happy that our very own Telugu boy Arman sang the song. Yes. Arman Malik is here, ladies and gentlemen. उनको भी मैं इनवाइट करूंगा एंड वी हैव दिस सॉन्ग जिसकी बात करेंगे एंड एक थोड़ी सी लाइव परफॉर्मेंस भी बनेगी, लेकिन उससे पहले कप्तान साहब ऑफ दिस शिप, लेडीज एंड जेंटलमैन, समवन हु थॉट अबाउट दिस और इस बड़े पर्दे पे बहुत बखूबी उन्होंने इसको निभाया है. शशि किरण टिका साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाए प्लीज. लेडीज एंड जेंटलमैन, कम ऑन, कैन वी हैव सम हल्ला गुल्ला फॉर हिम? या ही डिजर्व्स ऑल द लव. Shashi sir, welcome, welcome, welcome. You know, the josh that we are seeing on the big screen, how many times did you feel it as in you were like, मैं होता, मैं ये कर देता? Because we all, we are feeling it, like goosebumps throughout the trailer. What do you have to say? Yeah, I think rightly said. It was all throughout. Many places in the film, like in the process of making the film, right from writing to the making and in the post, all throughout, every now and then. It's not just goosebumps, it's all about emotion. Yes. Emotion comes out in various forms, and it's always been coming. And I think I already told that in Hyderabad. It's called energy that transforms. It does. And it is happening. And thank you, India. Thank you, world. Thank you, universe. Everybody who it's not just India. I've got messages from our neighboring countries, from the other continents. Everybody, it's just one word: goosebumps. So I'm so happy about it. I don't have words. This is something, sir, जिसके लिए मैं बोल सकता हूँ कि now we own it. It's our movie. Like you've already given it to us, and अब ये हमारी movie बन गई, and we'll make sure कि इसको इतना सारा प्यार मिले कि क्या कहें, जोरदार तालियां बनती है for Major, ladies and gentlemen. Absolutely. देखने जाएंगे. Well, it's time to invite on stage the producers, ladies and gentlemen. Sharat sir और अनुराग sir, A+S movies से, उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए. Come on, give it up for these two rock stars. No, you have to, sir. ऐसे कैसे? He's like, I'm not talking. पहले से ही उन्होंने disclaimer दे दिया. Thank you everyone for the amazing response. People usually talk about South films, Bombay and all of that, but
whenever we were here, the way media treated us, the way people have treated us, I think it's beautiful. And I think at the end of the day, we're all Indians. And I think for a film like this, for us to feel like this, I think it's just everything coming together. So I again thank you very much, and I am very confident that on the 3rd of June, you guys are gonna have a really, really amazing time, and it's like Sashi said, it's going to be goosebumps. So get ready for goosebumps on June 3rd. Absolutely. Get ready for that. And for now, ladies and gentlemen, before we launch the song, aap sab ke liye, it's time for a quick photo op and then a quick media Q&A. एक छोटा वाला brief वाला, and then later we'll do it थोड़ा और विस्तार से. So over to you. Click, click, click. Yes. Cool है. And we have the grand song launch. लेकिन उससे पहले इस ट्रेलर से जुड़े जो भी सवाल जवाब हैं, it's over to you. जी, कहाँ से आ रहा है पहला सवाल? भटनागर साहब? Yeah. How did you research for this role, and have you added anything fiction to this? Have you added any fiction to this character or in the film, or was it just as it is? Yeah, with your first question, our prime source of research is from uncle and auntie, Major Sandeep's parents. We've spent extensive hours knowing about Major. That's our prime source. And then we also went to his school, met his friends, teachers, and his colleagues in 7 Bihar. We went to the National Defense Academy in Kadakwasla, Pune. And also the NSG, of course, the Manesar NSG base. So we have spent extensive time researching about him and the incidents around his life. Yeah. Did you have to take any authorization from his parents? Oh, of course, we did. We did take the permission from his parents. And answering your second question, yes, it is not. It's a piece of work. It's a piece of work where there is a bit of fiction, but I can tell you one thing: it's honestly made. The fiction is also honestly made. I mean, we have put together certain areas of his life, because 31-year-old man's life putting in 2.5 hours, it's not that easy. So we put certain things together in a very honest way. Yeah. Do you feel that with hi, certain Adivi. pan-India films doing very well? साथ ही ये जानना चाहूंगी वो 7 बिहार रेजिमेंट से थे और साथ ही एनडीए से खड़गवासला से निकलकर आए हैं, वहाँ के पढ़े हुए हैं सर्टनली। बहुत सारे उस्ताद होते हैं, बहुत सारे वर्दीधारी होते हैं, किन किन को दिखाई है? क्या आर्मी से आपको अलग से कोई स्पेशल हेल्प मिली है? Yeah, I think we spoke to his superiors, जो उनके colonels वगैरह थे, मतलब 7 बिहार में उस time. We also spoke to the commandos that he was a training officer of in the National Security Guard. So I think there was a lot of support and a lot of interest in our film from the day it was announced. Especially in the south of India, where we are very well known. There's a lot of interest from Bangalore and Hyderabad and Kerala, of course, his home state. What we realized is that we didn't expect the level of happiness that people in the service would show to us. हमने ये सोचा कि यार सब कड़क होते हैं, सब एकदम तगड़ा होते हैं, मतलब बहुत सीरियस होते हैं, पर वो तो खुशी खुशी में गले लगा रहे थे, हमें दिखा रहे थे कि weapons ऐसे होते हैं, ऐसे shoot करो. Even last 26/11 when we did that tribute to Major Sandeep at the Taj, Sony thankfully organized a trip to the NSG Powai campus, और the NSG officers, they were testing my shooting skills और मेरे साथ celebrate कर रहे थे, so I think I clearly understood this beautiful sense of brotherhood, और इस
पूरे देश के ब्रदरहुड ने ना, जो जो डिफेंस फोर्सेस हैं, वेदर इट्स द नेवी इन वाइजैग, वेदर इट्स द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड इन मानेसर, 7 बिहार रेजिमेंट, बैंगलोर ऑफिसर्स, ये सब मिलके हमें फ़ोन करके पूछ रहे हैं, यार वी आर सो हैप्पी विद व्हाट यू डिड विद द ट्रेलर, वी आर गोना बी देयर जून 1st, जून 3rd, फर्स्ट डे फर्स्ट शो. दैट्स द आइडिया. लव अदिति, मेरा सवाल आपसे है. हियर, उपमा फ्रॉम नवभारत टाइम्स. या अदिति, ऐसा कहा जाता है कि जब भी कोई कलाकार एक किरदार निभाता है तो कुछ वो अपना देता है, उस किरदार से बहुत कुछ लेता है, वो किरदार आपको बदलता है. और मेजर संदीप तो मतलब रियल लाइफ सुपर हीरो थे. तो उस किरदार से आपने क्या लिया या क्या बदलाव आपकी ज़िंदगी में आया उनकी ज़िंदगी निभा करके? यार एक तो मैं ये कहूँ कि सेल्फिशनेस कम हो गई मुझ में. you know see, in the beginning of our teaser campaign, जो हम पिछले साल second wave के time we released a teaser and unfortunately we had to put our promotion on hold. We had a question in the teaser कि what does it mean to be a soldier? Soldier कौन होता है? I think by the time we finished making this film, मुझे ये समझ में आ गया कि soldier कौन होता है. Soldier वो होता है जो कहता है जान दूंगा देश नहीं. And that's what we understood from Major Sandeep's life. Hello. देश Let him complete, please. देशभक्ति तो सब में होती है. In fact, it was Major Sandeep's dad who said to me, बॉर्डर पे हमें कैसे लड़ना चाहिए, इंडिया को क्रिकेट मैच कैसे जीतना चाहिए, सचिन को बैटिंग कैसे करना चाहिए, ये सब सोचते हैं. मतलब सब में देशभक्ति है. पेट्रियोटिक बनना सबका काम है और इन पेट्रियट्स की रक्षा करना सोल्जर का काम होता है. Hello. Hi Adivi, towards your right, far right. रवि फ्रॉम एबीपी न्यूज़. हाय सही. 2-3 बार इवेंट्स पे हम मिल चुके हैं इसी आपके फिल्म के इवेंट्स पे ही, और 2-3 बार फिल्म की रिलीज डेट जो है वो चेंज हो चुकी है पेंडेमिक की वजह से. कितना डिसअपॉइंटिंग था आप लोगों के लिए जब 2 बार रिलीज डेट आने के बाद और इंतज़ार करना पड़ा, कोविड के ख़त्म होने का इंतज़ार करना पड़ा, और अब जाकर फाइनली फिल्म रिलीज होने वाली है 3 जून को? You know, I think disappointment तो है ही, but I think we were more concerned about the human cost, especially during the second wave. मैं तो movie को continue करने के mind space में नहीं था for a couple of months. You know, we were looking out for a lot of people. I was busy organizing hospital beds for a lot of people in different cities. So I think the disappointment was there, but हमें हमेशा ये पता था कि the moment we come, it will change the world. So we're clear. हेलो. एक सवाल और है अदिति जी से मेरा सवाल है. मैम आ रहा हूँ मैं आपके पास. I'll come to you. रवि जी कंप्लीट कर लो. I'll come to मैम. अदिति, आपकी फिल्म 3 जून को रिलीज हो रही है, साथ में 2 बड़ी फिल्में भी रिलीज हो रही है, कमल हसन फहद फासिल की विक्रम, और पृथ्वीराज अक्षय कुमार की और मानुषी छिल्लर की. तो ये त्रिकोणीय क्लैश होने वाला है बॉक्स ऑफिस पर. क्या एक्सपेक्टेशंस है और इस क्लैश के बारे में क्या कहना चाहेंगे? I think practically बात किया जाए तो we are the biggest film in Telugu. Vikram is the biggest film in Tamil and Prithviraj is the biggest film in Hindi. But while there are big fish in the sea, we are the goldfish. क्या बात है सर. एक छोटा सा और सवाल. अदिति, रवि सर मैं आऊँ वापस. Adivi, to your friend. Sir, we'll take the questions. I'll come back to you. Okay, एक sure. गाना भी है वो लॉन्च करते हैं. We'll come back to you. मैम आखिरी सवाल. मेरा सवाल पहले तो सही जी से है जी, कि welcome. आप काफ़ी चेंज आया, बहुत ब्यूटीफुल लग रही है. थैंक यू सो मच. और एक मेजर की गर्लफ्रेंड और वाइफ का रोल निभाना आपके लिए कितना चैलेंजिंग था और कितना मतलब आप गर्व महसूस कर रहे थे? गर्व तो बहुत महसूस करती हूँ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं एक ऐसे मूवी का हिस्सा बन पाऊँ. और आई थिंक चैलेंजिंग जो पार्ट था वो इन दोनों ने मुझसे करवा लिया और संभाल लिया. सो आई एम वेरी थैंकफुल टू देम. और आई थिंक मैं नॉर्मली इन रियल लाइफ बहुत केयर फ्री बबली हूँ. सो ऑन सेट्स समटाइम्स आई यूज्ड टू थिंक, यू नो, is this the right atmosphere to say this or do this, and they just made it so comfortable. So thank you guys so much. मेरा वही दूसरा सवाल उन्हीं अदिति जी से था कि मेजर संदीप का रोल निभाना एक चैलेंजिंग के साथ बहुत गंभीर किस्म का था, और पर्सनली आप बहुत जोक मारने वाले हैं, ऐसा उन्होंने भी बता दिया अभी थोड़ी देर पहले. तो जब ये किरदार आपको निभाना था तो
मतलब क्या फीलिंग थी आपके अंदर कि एक ऐसे इंसान का किरदार निभा रहे हैं जिन्होंने देश के लिए जान दी? आई थिंक ये भी शायद मेजर संदीप की वजह से ही हुआ, बिकॉज इन रियल लाइफ वो बहुत ही हैप्पी, वेरी फन, बहुत ब्राइट स्माइल के साथ, दैट्स द काइंड ऑफ पर्सन ही इज़. आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के फ़ैन है वो, लव्ड एक्शन फिल्म्स, दोस्त सब उनको सैंडी बुलाते हैं. ही इज़ दिस सुपर सोल्जर जो एकदम फन एंड फन लविंग थे. So I think that change happened to me क्योंकि मैं actually बाहर थोड़ा reserved हूँ. So playing Major Sandeep I think changed me like that. Amazing, The amazing. character We'll से just सवाल take है. I'll come to you. I'll take all the questions. Let's take a look at the song first, है ना? Please, सही please, ना? Cool please. ना? I'd love ठीक for you है. guys to check out We'll just Arman's come back. song here. And Arman is here. So अभी सबके अरमान भी पूरे होने वाले हैं, है ना? कुछ धमाल होने वाला है.